So students, as we have seen the two theorems, theorem 10.1 and theorem 10.2. So based on that, I'm going to start off exercise 10.2 here. You will see that I have left exercise 10.1. So that is just simply fill in the blanks that we can do later. Now let me just move on with exercise 10.2, right? So let me just tell you here in this exercise 10.2, question number first here is, recall that two circles are congruent if they have the same radii. Radii means, let me just tell you, radius of two circles, right? So यहाँ पे अगर हमारे पास दो circles हैं of the same radius, then they are congruent, right? Yeah, because they are of the same size, right? So let me just draw two circles here first. You can see this is the first one, and this is the second one. Now it is given that they are of same radius. That means कि they are congruent. As we have just read this in the previous classes also here, that कि अगर दो circles same radius के हैं, then they are congruent. Because congruency से हमारा मतलब ये है कि कोई भी दो figures अगर same shape और same size के हैं, then they are congruent, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं shape दोनों की circle है, same है. Also size भी इनका same है, because दोनों की radius जो है that is similar, right? Same है. Now that means कि अगर मैं इस circle को उठाकर इस circle के ऊपर भी रखूंगा, so they will just lie one over the other. So एक दूसरे को क्या करेंगे? Overlap करेंगे, right? यानी exactly इसके ऊपर आएगा. That means we can just differentiate between two circles. They are just will lie one over the other, right? So यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअल में प्रूव क्या करना है? We have to prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their center, right? So अगर आप दोबारा रिकॉल करें थ्योरम 10.1, जिसमें हमने देखा था that equal chords of a circle subtend equal angles at the center, right? So वहां पे थ्योरम 10.1 में हमारे पास एक सर्कल था जिसकी दो कोड्स थी जो कि सेम लेंथ की थी. दैट मींस वो सेंटर पे क्या बना रही थी? सेम एंगल्स बना रही थी. ये हमने प्रूव किया वहां पर. बट यहां पे जस्ट डिफरेंस क्या है थ्योरम से? दैट हियर यहां पे हमारे पास दो सर्कल्स हैं. नाउ यू कैन सी बोथ द सर्कल्स आर ऑफ सेम रेडियस. दैट मींस कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं. सो अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूंगा, सो दोनों लुक्स लाइक कि एक ही सर्कल ड्रॉ किया हुआ है मैंने, राइट? सो एक तरह से मैं बोलूं तो यहाँ पे सेम जो थ्योरम 10.1 है वही मुझे प्रूव करनी है. लेट मी जस्ट शो यू. सो यहाँ पे हमें ये गिवन है कि दोनों सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट है और इनकी जो कोड्स हैं वो भी इक्वल लेंथ की हैं. लेट मी जस्ट ड्रॉ टू कोड्स हियर लाइक दिस, राइट? सो लेट मी जस्ट टेक द सेंटर एज O एंड O डैश, राइट? सो आप चाहे तो इसको भी सिमिलर ही हो जाएगा इफ आई जस्ट सिंपली प्लेस इट ओवर हियर. सो फॉर द रेफरेंस यहाँ पे मैंने दूसरे सर्कल का सेंटर जो है O dash ले लिया, राइट? नाउ लेट मी जस्ट टेल यू, इफ आई जस्ट टेक दिस एज AB एंड दिस एज CD. सो हमें यहाँ पे गिवन है कि ये जो दोनों कोड्स हैं सेम लेंथ की हैं. सो लेट मी फर्स्ट राइट द गिवन थिंग हियर इन द सॉल्यूशन, राइट? सो द गिवन थिंग इज AB is equal to CD, right? So this is given in the question. Now आप देख सकते हैं हमें प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में कि ये जो दोनों कोड्स सेंटर पे एंगल बनाएंगी, यू कैन सी द AOB एंड COD, राइट? सो ये जो एंगल्स हैं ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. ये हमें प्रूव करना है, राइट? दैट मीन्स समहाउ वी हैव टू अगेन प्रूव थ्योरम 10.1. कैसे? अगर मैं इस सर्कल को उठा के इस सर्कल के ऊपर रख दूंगा, सो आप देख सकते हैं कैसा फिगर बनेगा. ये जो ट्रायंगल है यहां बन जाएगा बिकॉज सर्कल एक दूसरे को क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे. सो दैट मीन्स कि ये जो सर्कल उठा के इधर रखूंगा तो ये वाला ट्रायंगल यहां बनेगा. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट लाइक दिस. यू कैन सी द सेंटर्स विल ऑल्सो ओवरलैप ईच अदर, यानी कि O और O डैश जो है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, राइट? सो लेट मी जस्ट टेक इट एज O, राइट? सो हियर यू कैन सी दिस CD. सो यहाँ पे अगर चाहे तो मैं एक ही सर्कल के अंदर मैं इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकता हूं, और यू कैन ऑल्सो जस्ट प्रूव इट इन द डिफरेंट टू सर्कल्स. बट यहाँ पे ये जो सेम ही है, आप देख सकते हैं ये जो रेडियस है इन दोनों सर्कल्स की वो क्या है? सेम है बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट. दैट इज गिवन हियर. सेम रेडियस है.
So you can see if I just draw a single circle here, so that will be okay now with this question, right? So that means अब यहाँ पे मुझे सिमिलरली क्या प्रूव करना है, जैसा कि मैंने थ्योरम में प्रूव किया था 10.1 में, यानी कि अगर एक सर्कल की दोनों कोड्स इक्वल लेंथ के गिवन है तो वो सेंटर पे क्या बनाएंगी, इक्वल एंगल बनाएंगी. जस्ट द डिफरेंस ही यहाँ पे दो सर्कल्स थे बट दोनों कॉन्ग्रेंट थे. दैट मीन्स somehow we have got to prove the same thing, right? So यहाँ पे आपको पता है कि दोनों सर्कल की जो रेडियस थी वो इक्वल थी. दैट मीन्स यहाँ पे अब दो सर्कल्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, राइट? सो यू गॉट द क्वेश्चन. नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमें गिवन क्या है, दैट AB इज इक्वल टू CD. सो ऑल्सो यू कैन सी दिस रेडियस इज ऑल्सो इक्वल बिकॉज कि यहाँ पे हमें गिवन था कि दोनों सर्कल की रेडियस क्या है, इक्वल. सो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OD इक्वल टू OC, राइट? सो यहाँ पे OA जो है वो OD equal to OB equal to OC. So somehow all the radius are equal here. Now let me just show you what we have to prove here. So हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB जो है वो COD के इक्वल है, यानी कि ये जो दोनों कोड्स सेंटर पे एंगल बना रही हैं वो क्या है, इक्वल है. So that means we have to prove that angle AOB is equal to angle COD, right? This is what we have to prove. So let me just start off the proof here. So यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को लूंगा अगेन लाइक वी हैव टेकन इन थ्योरम 10.1, राइट? सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD we have, you can see the three conditions. यहाँ पे इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने के लिए बतानी है. सो द फर्स्ट कंडीशन इज OA इज इक्वल टू OD. आपको पता है दोनों सर्कल की रेडियस जो थी वो क्या थी, इक्वल, यानी कि OA जो है वो किसके इक्वल होगा, OD के, because they are the radius of the circle, right? Then the second condition will be that OB will be equal to OC. So let me just write that. So OB is equal to OC. Again you can see the radius of the both circle is equal here, that was given. Then the third condition is you can see this AB is given equal to CD. यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों कोड्स जो है वो इक्वल लेंथ की है दोनों सर्कल्स की, राइट? सो यहाँ पे AB जो है वो किसके इक्वल हो गया, CD. So you will find out that is given in the question and we are just simply proving again, you can see theorem 10.1 somehow, right? Therefore we can say that triangle AOB is congruent to triangle COD. Now the congruency rule here. So what congruency rule is used? Let me just look at triangle AOB. So यहाँ पे आप देख सकते हैं side, side and side. So by SSS rule here, we will get that triangle AOB is congruent to triangle COD. Now, जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि दोनों triangles को मैंने congruent prove कर दिया. That means now by CPCT you all know we can write that the corresponding parts of both the congruent triangles are equal by CPCT, right? So यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल AOB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, COD के, because they are the congruent triangles. So यहाँ पे सभी एंगल्स इक्वल होंगे. So एंगल AOB will be equal to angle COD, and this is what we have to prove here, that the equal chords of both the circles subtend equal angles at their center, right? So ये जो दोनों chords थी दो सर्कल्स की थी जो कि कॉन्ग्रेंट थे, यानी कि सेम रेडियस वाले थे, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों कोड्स जो है वो सेंटर पे क्या बनाएंगे, एक एक सर्कल के इक्वल एंगल बनाएंगे, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रूव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर. So students, let us move on to the next question of this exercise, that is question number second. Now here it is given that prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at their center, then the chords are equal. So you will find out that ये जो question है ये theorem 10.2 ही है exact में. You can see if I just show you here, just the difference from it is कि यहाँ पर हमारे पास congruent circles given है दो, right? So you can see, let me first draw the circles here like this. So हमें ये गिवन है कि ये जो दोनों सर्कल्स हैं कॉन्ग्रेंट है. सो कॉन्ग्रेंट से मतलब ये है कि दोनों सर्कल जो हैं वो सेम साइज के हैं, यानी कि इनकी रेडियस जो है वो भी क्या है, आपस में इक्वल है, राइट? दैट मीन्स दे आर ऑफ द सेम साइज. अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा सो दे विल सुपर इम्पोज ईच अदर, राइट? सो लेट मी जस्ट टेल यू कि इस क्वेश्चन में हमें प्रूव ये करना है कि इफ chords of congruent circles
यहाँ पे मैं इन दोनों सर्कल की कोड्स बना लेता हूं. लाइक हियर वी कैन सी, लेट मी जस्ट टेक द सेंटर. सो यहाँ पे ये जो दोनों सर्कल की जो कोड्स हैं, लेट मी जस्ट नेम देम ए बी एंड सी डी, राइट. सो यहाँ पे ये जो कोड्स हैं दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की, ये अगर सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं, सो एट देयर सेंटर्स, राइट. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ हियर लाइक दिस, राइट. सो यहां पे आप देख सकते हैं ये दोनों सेंटर्स पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं. दैट इज गिवन टू अस नाउ. देन वी हैव टू प्रूव दैट द कोड्स आर इक्वल, राइट. सो ये हमें प्रूव करना है यहां पे, विच इज द कन्वर्स टू द प्रीवियस क्वेश्चन लाइक इन द थ्योरम, राइट. सो ये एग्जैक्ट में एक तरह से थ्योरम 10.2 ही है जो हमने पहले प्रूव की है. अगर मैं उठा के इस सर्कल को इसके ऊपर रख दूं, सो यू विल फाइंड आउट, यू कैन सी, सो दैट विल बी लाइक यहाँ पे एक दूसरी, अगर दैट विल बी लाइक, यू कैन सी यहाँ पे ये जो कोड है इसके इधर आ जाएगी, एंड यू कैन सी अगेन द सिमिलर स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड लाइक इन द थ्योरम 10.2 वी हैव डन, राइट. सो चाहे तो आप अलग अलग सर्कल्स में भी प्रूव कर सकते हैं, बट वी कैन जस्ट सुपर इम्पोज दिस सर्कल ओवर टू दिस, राइट. सो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगी. यू कैन सी नाउ इट्स द सिमिलर प्रूफ हियर लाइक वी हैव डन in the theorem 10.2. so यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, let me just first write the name of the code. हमें प्रूव करना है कि ये जो AB है वो किसके इक्वल है, CD के, और गिवन क्या है हमारे पास, AOB जो है वो किसके इक्वल है, COD एंगल के, राइट. सो एंगल्स आर गिवन इक्वल टू अस एंड वी हैव टू प्रूव दैट द कोड्स आर इक्वल इन लेंथ, राइट. सो अगेन यू कैन सी द गिवन थिंग विल बी दैट एंगल AOB is equal to angle COD. so this is given here. Also you can see OA is equal to OB equal to OC equal to OD because they are the radius of the two circles which are congruent. So यहाँ पे ये जो दोनों सर्कल की जो रेडियस थी ये भी क्या हो जाएगी, इक्वल ही है. So they are all equal in length, right. So let me just now write to prove here. So हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, that AB is equal to CD, यानी कि कोड की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी अगर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल गिवन है, राइट. सो दिस इज एग्जैक्टली द सिमिलर प्रूफ दैट वी हैव डन इन थ्योरम 10.2. सो स्टार्टिंग ऑफ अगेन यू कैन सी, सो लेट मी जस्ट प्रूव अगेन इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. सो यहाँ पे अगेन मैं ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूं. सो वी नो दैट द फर्स्ट कंडीशन विल बी OA इज इक्वल टू OD because they are the radius of the two congruent circles, right. So the next condition is that this OB is equal to OC. Again they are the radius of the two congruent circles, so they are equal. Then the third condition here will be, you can see that AOB angle is equal to COD, that is given in this question, right. So angle AOB is equal to angle COD. So that is given in the question. Now you can see three conditions are written here. So therefore triangle AOB is congruent to triangle COD. Now the rule here, the congruency rule. So you can see side, angle and side, right. So by SAS, let me just write down rule here. We got these two triangles congruent, right. Now we know that if two triangles are congruent, then by CPCT we can write all the three sides and all the three angles equal. So यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ that AB is clearly equal to CD because ये दोनों triangles में lie कर रही है and we have proved them congruent. So AB is equal to CD. This is what we have to prove here. You can see that if the chords of congruent circles subtend equal angle at the center. So अगर ये chords जो है सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं, so then the chords will be equal in length also, right. So you can see that was all in this question. So I hope you have understood all the questions of exercise 10.2 and those theorems. So let me just move on further now in this video. We are going to discuss theorem 10.3. So there's another theorem here. Let me just discuss that straightforward, right. So यहाँ पे जो theorem 10.3 है, that is based on perpendicular from the center to a chord, right. So यहाँ पे हम बात करेंगे सेंटर से perpendicular लाइन की
to a chord, right? So यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं. Let me just tell you. You can see its center is O. Now let me just take a chord here of this circle. So that will be like here AB, right? So you can see I have drawn a chord here AB, and let me just tell you I'm going to draw a perpendicular line from the center of the circle to the chord, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक perpendicular line draw की from the center of the circle to the chord of the circle, right? So actually this theorem 10.3 says that the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. So आप देख सकते हैं ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से एक perpendicular line ड्रॉ करूं to a chord, then that perpendicular line actually bisect the chord. यानी कि वो chord को दो equal parts में divide कर देगी. So if I just gave this point as M here, so that means this theorem says that AM should have to be equal to MB, right? And this is what I am going to prove here. So let me just tell you, in this we have to prove that AM is equal to MB. That is, you can say that OM bisect AB, right? So ये जो perpendicular line है from the center to the chord bisect the chord. So यहाँ पे हमें prove करना है कि ये जो AM है वो क्या है, MB के equal है. So this theorem which is theorem 10.3 says that the perpendicular from the center of a circle to the chord bisect the chord, right? So let me just prove this thing. So इसको prove करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो जरूरत है that is of construction, right? So यहाँ पे मैं construction क्या करने वाला हूं, that join OA and OB, right? So यहाँ पे मैं OA you can see and OB को ज्वाइन करने वाला हूं like this. So अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, one is OAM and the other one is OBM, right? So यहाँ पे मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करूंगा, congruent प्रूव करूंगा, like we have also done in theorem 10.1 and 10.2, right? So again यहाँ पे भी दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं and I'm going to prove them congruent. So as you all know, if two triangles are congruent, then by CPCT we can write all the angles and all the sides of those triangles equal, right? So यहाँ पे अगर मैं इन दोनों triangles को congruent prove कर लूंगा, then we can say that this side AM of this triangle OAM is going to be equal to the side MB of triangle OBM, right? So यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों sides जो हैं वो इन दोनों triangles की हैं, और अगर मैंने इन दोनों triangles को congruent prove कर दिया, then by CPCT we can write that AM is equal to MB. And you know, to prove them congruent, we need three conditions, right? So let me just start off my proof here. So in triangle OAM and triangle OBM, right? So यहाँ पे सबसे पहली condition जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, that is OA is equal to OB. अगर आप ध्यान से देखें ये जो A और B points हैं ये circumference पे लाई कर रहे हैं, that means center से जो इनका distance होगा वो क्या होगा, radius. So we know that एक circle की रेडियस क्या होती है, इक्वली होती है. दैट मींस ये जो OA और OB है ये क्या है, रेडियस है इस सर्कल की. सो दे आर इक्वल, राइट? सो द रीजन इज दैट दे आर द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. देन द सेकंड कंडीशन यू विल फाइंड आउट कि इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये जो OM है ये कॉमन है. OAM भी OM आ रहा है, OBM में भी OM आ रहा है. सो OM इज क्लियरली इक्वल टू OM. सो दिस इज द कॉमन साइड of both the triangles, right? So यहाँ पे दो conditions मैंने आपको बता दी. Then the third condition, the most important here is that we know that ये जो OM है वो इस AB के क्या है, perpendicular है. यानी ये दोनों एंगल कितने के हैं, 90 के. That means angle OMA is equal to angle OMB. So यहाँ पे मैं लिख लेता हूं angle OMA is equal to angle OMB. Now you can see each is of 90 degrees, right? So that means therefore now we can say that triangle OAM is congruent to triangle OBM. Now the most important thing is the congruency rule, right? So which congruency rule is applied here? Now if you just find out that this is a 90 degree angle, so इसके सामने वाली साइड क्या होती है, hypotenuse, right? So this OA is equal to this hypotenuse OB, right?
सो यानी कि ये जो आप देख सकते हैं ओ और ओबी रेडियस है, ये एक्चुअल में और क्या है, हाइपोटेनियस भी है यहाँ पे, राइट. सो यू कैन सी वन इज द हाइपोटेनियस, अदर इज द राइट एंगल, देन द राइट एंगल, hypotenuse, and you can see one common side OM, right? So this is the side here, you can see OM is equal to OM. So RHS rule will be applied here, right? That is right hypotenuse and one side. So यहाँ पे right angle भी है, इसके सामने वाली hypotenuse side भी equal है और ये common side है, right? So by RHS rule here, let me just write rule. So we have got both the triangles congruent. So जैसे कि अब हमने इन दोनों triangles को congruent prove कर दिया. Now you know that by CPCT we can just directly write that AM is equal to MB because ये दोनों side जो है वो इन दोनों triangles की है. And जैसा कि हमने इन दोनों triangles को congruent prove किया, then by CPCT we can say that AM is equal to MB, right? That means that OM bisect AB, right? And this is what we have to prove here, that the perpendicular from the center to the chord bisect the chord. So remember this theorem that will come into play when we discuss the further exercise, right? So you can see we have done this theorem which says that the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. So that was all in this theorem. So students, now let us move on to the converse of this theorem 10.3. As you have seen, there was theorem 10.1. That means there exists a converse of that theorem. Then we have done theorem 10.2. So जैसे कि theorem 10.1 का converse था theorem 10.2, उसी तरीके से theorem 10.3 जो हमने अभी की है उसका भी एक कन्वर्स है, दैट मींस द वाइस वर्सा कंडीशन. सो यहाँ पे थ्योरम 10.4 व्हिच इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.3, दैट इज आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर. सो यू कैन सी इन थ्योरम 10.4 जो है, इट इज गिवन दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ chord इज परपेंडिकुलर टू द chord. सो यहाँ पे क्या है, इस थ्योरम के अंदर हमें गिवन है कि अगर हम यहाँ पे सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, नाउ यू कैन सी वी डोंट नो दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर. जैसा कि हमें थ्योरम 10.3 में क्या गिवन था, दैट इफ वी जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर टू अ chord देन इट बाइसेक्ट द chord. बट यहाँ पे जो हम सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर है, ये हमें नहीं गिवन, राइट? बट we draw a line from the center which bisect the chord. यानी कि अब यहां पर हमें क्या गिवन है कि ये जो लाइन हमने सेंटर से ड्रॉ की है ये इस chord को बाइसेक्ट कर रही है. यानी कि now in this it is given that AM is equal to MB, जो कि हमें पिछली थ्योरम में प्रूव करना था, राइट? सो यहाँ पे हमें ये गिवन है कि ये जो सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ये इस chord को बाइसेक्ट कर रही है. देन दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द chord. यानी कि हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन जो इस chord को बाइसेक्ट कर रही है ये इसके परपेंडिकुलर है chord के, राइट? विच वाज यू कैन सी गिवन थिंग इन द थ्योरम 10.3. सो थ्योरम 10.3 में हमें गिवन था कि ये जो सेंटर से हमने लाइन ड्रॉ की है ये क्या है, परपेंडिकुलर है chord के. बट इस थ्योरम के अंदर ये लाइन हमें परपेंडिकुलर प्रूव करनी है. द गिवन थिंग इज दैट द लाइन एक्चुअली बाइसेक्ट द chord. यानी कि AM इक्वल टू MB हमें यहाँ पे गिवन है. सो हमें यहाँ पे जो प्रूव करना है दैट इज यू कैन सी OM इज परपेंडिकुलर टू AB. दैट इज अगर ये परपेंडिकुलर है दैट मीन्स एंगल OMA और OMB किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के इक्वल. सो यू कैन सी either this or this, the same thing is what we have to prove in this question, right? That means OM जो है वो AB के perpendicular है, या फिर हम ये प्रूव करते हैं कि ये एंगल क्या है, 90 है. That means that this line is perpendicular. So how we will do this? Just again you have to do the construction here like this. So सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, in the construction you have to join OA and OB, right? Let me just write it clear. So this is the construction. Now let me just start off my proof. So you can see the proof here will be
So in triangle, let me just write it on the above side. So here you can see in triangle OAM and triangle OBM. Again you can see here I am going to take the two triangles which are forming here. So यहाँ पे हमें again three conditions चाहिए. So now what they will be? So सबसे पहली condition है ये जो OA length है, that is the radius is equal to OB, because ये दोनों क्या है, radius of the circle, so they are equal. So OA is equal to OB. So the reason is the radius of the circle, right? So they are equal. Now बात करते हैं दूसरी condition की. So what is the second condition? Again you will find out that OM is equal to OM. ये जो क्या है common side है, like in the previous one also, right? So यहाँ पे OM जो है वो किसके equal है? OM, and the reason is common side, right? So ये तो हुई second condition. Now talking about the third one. So what it will be? You can see it is given here that ये जो line थी ये इस chord को क्या कर रही थी? Bisect कर रही थी. That means AM is equal to MB, and that is given here. So AM is equal to MB, and the reason is it is given in the question. So you can write therefore triangle OAM is congruent to triangle OBM. So what is the reason here? So you will find out, let me just check out the congruency rule. So you will find out this is the side, then you can see this is the side and this is the side. So by SSS rule here, we have got triangle OAM congruent to triangle OBM. Now as you know that if we have proved these two triangles congruent, then we can just write by CPCT all the three angles and all the three sides equal. So यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल OMA जो इस ट्रायंगल में आ रहा है इक्वल लिख रहा हूँ ट्रायंगल एंगल OMB जो कि इस ट्रायंगल में आ रहा है, राइट? सो ये जो दोनों एंगल्स हैं मैंने इनको क्या प्रूव कर दिया, इक्वल. सो दैट मींस एंगल OMA इज नाउ इक्वल टू OMB बाय CPCT, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों एंगल्स अभी क्या आ चुके हैं, सिर्फ इक्वल आए हैं, बट हमें प्रूफ क्या करना है इनको 90 डिग्री का, राइट? सो हाउ वी विल प्रूव दिस? सो आप देख सकते हैं अगर ये आप देखें कि AB जो है कोड थी वो एक स्ट्रेट लाइन है. सो लेट मी जस्ट नाउ रब द स्पेस. सो यहां पे अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं, नाउ वी नो AB इज अ स्ट्रेट लाइन. सो हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री. सो आप देख सकते हैं ये AB जो एक स्ट्रेट लाइन थी, ये इसका एंगल कितना होगा कंप्लीट 180. दैट मींस ये पूरा एंगल कितने का हुआ 180 का. सो यू कैन सी दिस OM इज अ रे स्टैंडिंग ऑन AB, राइट? सो ये जो OM है ये इस 180 डिग्री एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि एंगल OMA प्लस एंगल OMB पूरा मिला के कितना बनेगा 180. सो वी कैन राइट दैट दिस इंप्लाइज एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180. सो दैट मीन्स ये क्या है, लीनियर पेयर है. साथ साथ वाले एंगल्स जिनका सम 180 होता है वो क्या होता है, लीनियर पेयर, राइट? सो यहां पे आप देखेंगे मैंने क्या प्रूव किया बाय CPCT, OMA जो है वो किसके इक्वल है, OMB के. सो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, एंगल OMA की जगह क्या लिख सकता हूं, OMB, बिकॉज ये क्या है आपस में इक्वल है. सो मैंने OMA की जगह क्या लिख दिया, OMB प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180. सो आप देख सकते हैं एंगल OMB प्लस OMB ये कितना हो जाएगा, 2 एंगल OMB इक्वल टू 180, राइट? नाउ आप देख सकते हैं ये 2 मल्टीप्लाई मैं इसको मैं कहां शिफ्ट करूंगा, इन द डिवीजन ऑफ 180. सो दैट विल बी एंगल OMB इज इक्वल टू 180 अपॉन 2. सो 290 जब 180, सो दैट मीन्स एंगल OMB कितना आ गया 90 डिग्री. एंड वी नो दैट OMA एंड OMB आर इक्वल, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल OMA. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एंगल्स मेरे पास कितने के आ गए 90 के. सो दैट मीन्स कि ये जो OM है ये क्या है, इस AB के क्या है, परपेंडिकुलर, राइट? सो दैट इज यू कैन से दैट OM is perpendicular to AB, and this is what we have to prove, that if a line drawn from the center of a circle to bisect a chord, so that is perpendicular to that chord, right? So this theorem is saying this, right? So remember the theorem 10.4, which is the converse of theorem 10.3. So this theorem says that the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is
perpendicular to that chord, right? So this is theorem 10.4. So that was all in this question.